Hi guys, welcome to my channel Himalayan Highlander, and today I'm going to Changi Airport, which is approximately 5 or 6 kilometers away from my place. So for that I have to take a bus, and the bus numbers are 27 and 34 number, which will drop me there in next 30 minutes. So चलते हैं. So finally I have reached at bus stop. Now I have to wait for 34 bus number, which will take me to Changi Airport. जैसे कि गाइस कोविड-19 चल रहा है और आपको ना एयरपोर्ट ऐसे बिल्कुल सुनसान टाइप का लग रहा है मुझे आज, तो मैंने कभी फील नहीं किया कि कभी मैं एयरपोर्ट आऊँ और इतना सुनसान फील करूँ. कोई नहीं दिख रहा है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे. और देखते हैं कि आज चांगी ज्वेल एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते. लेट्स सी. एंड I had seen a lot of flights also जो बिल्कुल खड़ी हो रखी हैं, और ऐसे अजीब सा माहौल चल रहा है जैसे गमगीन सा माहौल नहीं होता. इवन यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी एक्चुअली क्या है कि सेल वेल पे कुछ हो नहीं रही है, तो सारा का सारा जो काम है वो सारा का सारा उसमें वो सारा का सारा कुछ काम है नहीं, तो ऐसे घूम रहे हैं और कुछ हो ही नहीं चल रहा है. So Changi Airport is not only known for commuting, it is also known for malls. और अब मैं जस्ट मॉल के अंदर घुसने वाला हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ स्पेशली आया हूँ. तो चलते हैं मॉल के अंदर. ये जो मॉल है ये नेचर बेस्ड थीम पे बना हुआ है. इसके सराउंडिंग में आपको शॉप मिल जाएगी, पर सेंटर में एक ब्यूटीफुल झरना टाइप का है, which I'm going to explore now. So तो चलो चलते हैं इस मॉल की सबसे खास चीज़, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और जिसके लिए पूरे सिंगापुर से लोग देखने के लिए आते हैं. और ये पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस स्पॉट है और बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है, तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रैवल है वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए.
trying to say, when I talk about the Singaporean government, right, they always think about nature first before taking any building or anything. So which I really like. तो यहाँ पे ये जो मॉल है, इसके मॉल पे जो बीच सेंटर में तो जो ये एक टाइप का जो झरना है वो बह रहा है, बट ऑन दी सर्कमफेरेंसेस यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ शॉप्स. तो जो बंदा जैसे कभी कोई लेट हो गया या कम्यूट करने में अभी बहुत टाइम है फ्लाइट को, तो मोस्टली जो बंदे होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे जाके ना इसको पूरे दिन भर पूरे जितने भी घंटे होते हैं सब यहाँ पे बैठे रहते हैं और इन्जॉय करते हैं. तो लेट्स एंजॉय टुगेदर आज, और चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं इस ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल जंगल को. तो मैं अब आइसक्रीम ख़रीदने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पे टाइम स्पेंड करने का, और मुझे वैसे भी थोड़ी सी भूख लग गई है. तो मैं पहले आइसक्रीम पार्लर जा रहा हूँ और फिर यहाँ पे वापस आता हूँ और फिर एक्सप्लोर करते हैं इसको. तो आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये पीछे एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाता है. दिस इज़ टर्मिनल 2 और टर्मिनल 1 भी इसको ही साथ जोड़ते हुए आगे निकल जाता है. तो यदि आपको ऐसे कुछ पसंद आए और कुछ जाना चाहता है तो इसीलिए इसको ना इसके साथ कनेक्ट कर रखा है. एक्चुअली दिस इज So now I purchased आइसक्रीम और इसको मैंने पे किए हैं $4.5. एक काम करते हैं सीधा ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं और वहाँ पे बैठ के खाते हैं इस आइसक्रीम को. चलो अब 5th फ्लोर की तरफ चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि इस वाटरफॉल का नज़ारा कितना ब्यूटीफुल है. Once you will reach at 5th floor, you will find a lot of restaurants and bars where people can go for hangout. और इसके अलावा यहाँ पे एक 2 ब्रिज हैं, कैनोपी ब्रिज एंड देयर इज़ वन मोर. और कैनोपी ब्रिज में जाने के लिए वी हैव टू पे एटलीस्ट $8 फॉर अडल्ट्स एंड देन 7.5 फॉर एज्ड पीपल. So hope you guys really like this video. If you really like this video, please share, subscribe, like and comment. और इस ब्यूटीफुल व्यू को पीछे छोड़ते हुए जा रहा हूँ और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.